in continuity for the same dear students, we were just doing revision of lesson 1, the last lesson. In our previous lecture, be in continuity dear students. So mind map, to look at the concepts, think you are crystal clear about all these basics. So now just let us start. So already we were doing that by French was testified, given chance to explain participles, but he could not. And at that moment he was able to recognize his mistakes. Was able to recognize that he used to be careless. So just look at the next point. All the villagers were there to pay tribute to that teacher. Why? So if we answer why of this particular point, the reason behind that was M. Hamel had been serving there for 40 years. Automatically, high personalities of village wanted to pay proper respect to that particular fellow. So that is why they were in the class to pay proper tribute to that faithful or honest teacher. Our next step is, you have to look at the next step. So now you will be able to highlight the next point, that is the next point of the same chapter. M. was also looking at the negative points. What negative points? Why the students were not able to learn properly. Particularly यहाँ some students के लिए यहाँ पे he was highlighting friends. So now just look at जब वो सुना नहीं पाया था बच्चा, तो टीचर ने डांटा नहीं उसको पनिशमेंट नहीं दिया, तो रिमार्क्स हाईलाइट किया, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर था. ही नेवर वांटेड टू बीट दैट गाय, कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना चाहता. तो क्या रिमार्क्स थे टीचर के उस टाइम पे? लुक एट द दिस पर्टिकुलर पॉइंट. He commented on that particular point that the people of Alsace and Lorraine were in the habit of postponing things. तो टीचर जो था उस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है इन एरियाज में. बच्चे जो है आज का काम कल पे छोड़ दे, जिसके कारण वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि कल कभी नहीं आता. तो ऑटोमेटिकली was able to recognize the fact. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखोगे, you will have to look at, तो वो टीचर एक पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे. देखिए क्या सोचेंगे कौन. जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो वो कहते हैं लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ फ्रेंच के लोगों को अपनी लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी नहीं. So just look at this particular point. He wanted to make the people recognize the fact that our languages are based. तो अब वो कंट्री हार चुका था, वहां से वो लैंग्वेज एलिमिनेट होने का ऑर्डर आ चुका था और नेक्स्ट डे से फ्रेंच टीचिंग वाज नो मोर. तो यहाँ पे टीचर पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या सोचेंगे पर्शियंस, कि
क्या इन लोगों को अपनी लैंग्वेज में नहीं आती? क्योंकि किसी भी कंट्री की लैंग्वेज जो उस कंट्री की प्रेस्टीज होती है, चाहे कोई भी कंट्री हो, तो यहाँ आई थिंक क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं व्हाई द गाय वाज नॉट एबल टू लर्न कि फ्रांस पढ़ाई कर क्यों नहीं पाया, क्या कारण था। आप देखिए फर्स्ट रीजन क्या वो हाईलाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स। तो सबसे पहली इग्नोरेंस थी पेरेंट्स। क्यों? पेरेंट्स वर वेरी इग्नोरेंट, दे वर नॉट एंशियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न। तो पेरेंट्स को चिंता ही नहीं थी कि उनके बच्चे पढ़े। तो अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं होते तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड का ना होला, बेसिक फैक्ट। यहाँ बच्चा खुद ही इतना समझदार होना चाहिए, अपनी रिकग्निशन उसको होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जो अपना काम है खुद ही करना होता है। तो यहाँ पे एम हैमल जो है पॉइंट आउट कर रहा है, पेरेंट्स वर मेनली रिस्पॉन्सिबल, दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो क्या करते पेरेंट्स, क्या करते थे, वहां के बच्चों को स्कूल से छुट्टी करा के फार्म हाउसेस में भेज देते थे कि बेटा जाके वहां थोड़ा काम करो, स्कूल को मिस करके। तो चिल्ड्रन प्रेफर टू बी पुट टू वर्क ऑन फार्म्स और मिल्स। अगर किसी पेरेंट्स की मिल होती तो बच्चों को मिल होती थी तो मिल्स में भेज देते थे कि बेटे जाके वहां असाइनमेंट करो, वहां काम करो, या फार्म में जाके काम करो। यानी उनको स्कूल भेजने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता। ऑटोमेटिकली योर क्रिस्टल क्लियर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब वो बहुत ऑनेस्ट टीचर था एम हैमल, तो यहाँ वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है, blaming himself। अपने पे क्या ब्लेम ले रहे हैं वो? He blamed himself for sending children for doing other assignment instead of teaching in a sincere way। तो कई बार क्या करता थे एम हैमल, बच्चों को मेरे गार्डन में पानी दिया, ये काम करा। पुराने टीचर जो होते थे they used to do such type of actions। तो उसको ये याद आया कि मैं भी बच्चों का टाइम वेस्ट करता था, मैं फिशिंग के लिए चला जाता था, छुट्टी बच्चों को कहता था कि आज क्लास नहीं होगी, या बच्चों को अपने पर्सनल काम के लिए भेज देता था पढ़ने की बजाय, पढ़ाने की बजाय। तो यू शुड बी एबल टू लुक एट द थिंग कि यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। इस जो पिन पॉइंट है, ये माइंड मैप का जो पॉइंट है, ये कंक्लूजन है एम हैमल का। एम हैमल जी जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि व्हाई friends could not understand the base of this language। तो उसके कंक्लूजन में he had designed number of points, he had concluded number of points। तो ऑलरेडी सबसे पहले तो उसने कहा कि पेरेंट्स से भी पहले उन्होंने कहा बच्चे, दे पोस्टपोन टुडेज असाइनमेंट फॉर टुमारो। And second, parents. And third, if we look at this particular point, third was M. Hamel himself। वो कई बार बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, उनको कह देते थे कि आज क्लास नहीं होगी। क्यों? रीजन बिहाइंड कि उनको फिशिंग के लिए जाना होता, या जब स्टडी आवर्स होते थे बच्चों को पढ़ाने की बजाय, यानी यहाँ फ्रेंड्स के थ्रू वो हाईलाइट कर रहे हैं कि वो अपने पर्सनल कामों के लिए भेज देते थे कि बेटा जाओ मेरे गार्डन में पानी दे आओ, ये काम कर लो, वो काम कर लो। तो ये ट्रेडिशन पुराने टाइम में बहुत कॉमन था। तो यहाँ पे वो तीनों को हाईलाइट कर रहे हैं, तीनों की क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर। अगर इन तीनों की कोऑर्डिनेशन नहीं बनती, अगर तीनों की कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वे से नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता, या पेरेंट्स जो है क्यूरियस नहीं होते कि उनके बच्चे पढ़े,
बच्चे क्यूरियस नहीं होते कि हम अपना काम जो है रेगुलर वे से करें, और टीचर अगर क्यूरियस नहीं होता कि अपना काम प्रॉपर वे से करवाया जाए, रेगुलर एजुकेशन हो, तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन कैन नेवर बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो कभी भी प्रॉपर वे से एजुकेशन नहीं हो सकती। तो इसीलिए हैमल जो थे उन्होंने स्टूडेंट्स पे ब्लेम किया, पेरेंट्स पे किया, फिर अपने आप पे भी किया, क्या मेरी भी गलती है? तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और जस्ट लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। If we look at the next point of the same chapter, जो आपको माइंड मैप में जो नेक्स्ट एंट्री करना है, जस्ट लुक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब हमारा मेन है एम हैमल की चीज लेसन। अब मेन पॉइंट ये है हमारा, इसको सब पॉइंट में कन्वर्ट करके वी मस्ट एंटर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन आवर मेमोरी मैप और माइंड मैप। तो यहाँ कैसे पढ़ाते हैं, यू हैव टू लुक एट द थिंग्स। लास्ट क्लास उनकी कैसी थी, कैसे किस तरीके की टीचिंग थी उस दिन। नाउ जस्ट लुक एट द बेसिक पॉइंट। ऑटोमेटिकली नॉट इन अ वेरी फाइन वे। वो चाहते थे कि जो मुझे नहीं भी आता ना, वो भी बच्चों को मैं नॉलेज दे दूं। Was teaching excellently on that particular day because it was his last class. तो ऑटोमेटिकली अगला स्टेप क्या था उनका, जस्ट लुक एट द थिंग्स। तो उन्होंने ये भी समझाया, क्या समझाया ऑडियंस को, कि ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट फ्रेंच। उन्होंने समझाया कि फ्रेंच इज अ वंडरफुल लैंग्वेज। तो we possess no right to forget this language. तो अगला उन्होंने पॉइंट क्या किया, यू हैव टू लुक एट द थिंग। उनको ग्रामर का लेसन पढ़ाया उन्होंने, यानी फ्रेंच ग्रामर का। अगला स्टेप क्या था, ही वांटेड स्टूडेंट्स टू लर्न इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। तो ही had taught in a very elaborated way. So now just look at that particular point. तो ग्रामर पढ़ाने के बाद उन्होंने राइटिंग लेसन भी रिपीट करवाया। तो देन व्हाट वाज द नेक्स्ट, तो बच्चों को उन्होंने नई कॉपीज दी। दे हैड गिवन न्यू कॉपीज टू स्टूडेंट्स विद फ्रेंच एल्सेस रिटन इन ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग ऑन देम। उन जो नई कॉपीज थी उनके ऊपर बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में अल्सेस और फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ। Automatically, by this particular action, he wanted to pay proper respect to this particular language. Oh, just look at the things. तो बहुत एक्सीलेंट वे से उन्होंने उस दिन लेक्चर दिया, हर पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो was very enthusiastic to teach on that particular day. Along with that, he had taught the importance of French language. Importance of mother tongue. He had just highlighted that. Now just look at the next. तो आपको इतने एक्सीलेंटली टीचर पढ़ा रहे थे, यानी he was teaching in a very fine way. तो जिसके कारण क्या था, you have to look at the next point. Everyone said to work very quietly. Every student was listening very carefully. और बच्चा जो था बड़ा ध्यान से मैमल के लास्ट लेक्चर को सुन रहा था। Then so there was pin drop silence. Pin drop silence होता है जहाँ बिल्कुल साइलेंस
होती है, क्वाइट इन्वायरमेंट होता है, पिन की भी आवाज आती है, तो अगर पिन भी गिरता है तो उसकी आवाज भी सुनाई देती है. तो यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो everybody was busy in study. The only sound heard is the scratching of pens over paper. जब राइटिंग लेसन कर रहे थे बच्चे, सिर्फ आवाज किस चीज की आ रही थी? Scratching of pen over notebooks. So you have to look at this particular point. जब वो पेन से हैंड राइटिंग कर रहे थे, नोटबुक्स के ऊपर लिख रहे थे, बस उसकी आवाज. Otherwise, there was pin drop silence. So then the little ones also work with concentration. तो छोटे बच्चे थे उस स्कूल में, they were also doing their best. उन्हें भी बहुत ध्यान से अपना काम कर रहे थे. But beetles failed to distract. फिर वहां पे थोड़ी सी भी इंटरप्शन हुई या इंटरप्शन क्रिएटेड बाय pigeons or beetles, they were not able to look at that, क्योंकि they were over busy in their studies. उनको नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, कौन सी आवाज आ रही है, because they were listening and hammer in a very fine way. So, last class was very enthusiastic class. Now just look at the next page. तो इस मेन पॉइंट, जो थर्ड मेन पॉइंट है आज आपका बेटा इसी चैप्टर का, फ्रेंड्स रिकॉल देम हैमर्स डेडिकेटेड सर्विस. फ्रेंड्स को रिकॉल होता है जब बंदा याद कर रहा होता है, कोई उसकी जो मेमोरी होती है या कुछ पॉइंट उनके मन में आ रहे होते हैं. एम हैमर्स डेडिकेटेड सर्विस. वो बच्चा जो इतना केयरलेस बच्चा था, जो अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान नहीं देता, उस दिन वो बच्चा he was just recalling and having dedicated service. So he was just looking at the points. He had been serving for 40 years. He was looking at that particular point. और एक और उसको sincerely he was reminding that particular point कि you have to look at. So nothing had changed. The garden outside the window and his class in front of him. तो हम हेमल जी ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो तब क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन. बस हाईलाइटिंग करते हैं, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट की बात वो सोच रहे हैं कि कुछ चेंज नहीं हुआ. जो बाहर गार्डन था उनके स्कूल, जहाँ पे उनके स्कूल की बिल्डिंग थी, तो वो और क्लास बिल्कुल सेम थे. यानी जो लोकेशन थी स्कूल की उसी जगह पे थी. बस जस्ट लुकिंग एट द पॉइंट्स. सिर्फ जो डेस्क थे और जो बेंचेस थे, तो दे हैड वॉल स्मूथ. वॉल स्मूथ का मतलब यू शुड बी एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. जब नए नए बेंचेस और डेस्क होते हैं, बड़े आई थिंक हार्ड होते हैं. आप जैसे ही यूज करते हैं पुराने होते जाते हैं, तो दे बिकम स्मूथ. तो वो हाईलाइट, उस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है. तो साथ में वो कह रहे हैं कि जो वॉलनट ट्रीज है, जब वो आया था छोटे छोटे प्लांट्स थे जो वॉलनट ट्रीज बन चुके थे उस टाइम पे. तो कहते हैं वो बहुत छोटे छोटे थे जब उसने ज्वाइन किया था स्कूल को, अब वो बड़े हो चुके हैं. तो एंड होपफुल planted by him went above the window to the room. होपफुल. तो मैंने जो क्लाइंबर लगाया था वो काफी उसको ग्रो हो चुका. Was just looking at the things, he was comparing and contrasting the physical features of that particular place. He is quite well able to look at. He just look at this particular point in a very sincere way. Now, next is look at the ending point of this chapter. So
एम हैमल जो उस दिन पढ़ा रहा होता है पूरी अपनी जितना भी असाइनमेंट यूजुअल वे से करते थे, he had done everything, he had heard every lesson to the last. तो उसके बाद he had delivered his last lesson in history. ग्रामर के बाद उन्होंने हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया. Then everyone is aroused to emotion when the lesson draws to its close. जैसे ही लेसन जो था खत्म होने वाला हुआ, everyone was emotional. क्योंकि उनको था कि लास्ट लेसन है, आज के बाद एम हैमल जी यहाँ नहीं होंगे पढ़ाने के लिए. So that is why everybody was very emotional. तो हर किसी के आंखों में आंसू थे, इमोशंस के जो आंसू थे. तो टीयर्स रोल डाउन आईज ऑफ स्टूडेंट्स. तो नाउ जस्ट लुक एट एंड कैसे किया उन्होंने अपनी क्लास का. यू विल हैव टू लुक एट द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. तो जैसे ही चर्च क्लॉक्स स्ट्रक 12, trumpets of the Persian soldiers sound under the windows. पर्शियन सोल्जर्स थे, उनकी जो आवाज थी आनी शुरू हो चुकी थी. कहां से? उनकी विंडोज से. तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे एम हैमल वाज वेरी वेरी इमोशनल. द लिटिल वीवे लैड फ्रेंड्स, and he was not able to speak anything because he was extremely emotional at that moment. But just made a signal that the class was over, everybody could disperse. So vive la France का मतलब होता है long live France. So I think you are crystal clear so far as the basic phase of this chapter are concerned. So now just look at a few words. तो vive la France already मैंने आपको बता दिया बेटे, इसका मतलब long live France. A few words you have to look at. यहाँ पे beginning में dread word you will be able to look at. Dread means fear. So now just look at apprentice. One word is there, apprentice. We look at the meaning of this word. It means the person who works for an employer to learn an art or trade. जो practical knowledge के लिए किसी से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, उसको अप्रेंटिस ट्रेनी बोला जाता है. कि a person who works for an employer to learn an art or trade. जैसे कोई इंजीनियर है, वो ट्रेनिंग इंजीनियर पॉइंट होता है किसके लिए? ट्रेनिंग लेने के लिए, ताकि अपने नेक्स्ट स्टेप उसका ये हो कि वुड बी एबल टू गेट परफेक्शन इन दिस जॉब. तो अप्रेंटिस बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है जो टेक्निकल नॉलेज के लिए जो हम लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज, एक वर्ड है यूनिसन. इसी चैप्टर में यू हैव स्टडीड द वर्ड यूनिसन. यूनिसन क्या होता है? यू हैव टू लुक एट. इट मींस noise or speak in one voice. The noise caused by a group. जो आवाज ग्रुप की तरफ से होती है, जब इकट्ठे मिलकर बोलते हैं, उसको बोला जाता है. और एक वर्ड है सॉलम. एम के बाद जब भी आना होता है साइलेंट रहता है सॉल्व. तो इट मीन्स सीरियस. We will look at the next difficult word. We have to look at this. I think next difficult word is mounted his chair. Mounted his chair. If we look at the meaning of this particular word, it means
seated on chair. कि एम हैमल जी जो थे, जब ये तब यूज किया गया था जब वो अपनी चेयर पे बैठ गए थे. Seated on chair. Now just look at the next difficult word of the same lesson. Next is you have to look at reproach. REPROACH. तो बेटे इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज. I think you are crystal clear so far as the hard words of this lesson are concerned. अब क्वेश्चन आंसर जो होंगे आपको क्या करना है, यू हैव टू लुक एट द पिन्स. जो बेसिक जो पिन होगा उसको इंसर्ट करना है जब भी आप कोई भी आंसर लिखोगे. इफ द क्वेश्चन will be in past tense, it is your moral responsibility to answer that question in past tense. And if it will be in present tense, answer in present tense, and strictly must be able to follow prescribed word limit. जो पूछा गया है उसका आंसर देना है. So you have to look at the things in a very systematic way and look at the question base also. Don't forget to look at question base. Now demo one or two questions we will do so that you should be able to recognize. अगर ये question हो, how to sort out this particular question, what had been put on the bulletin board? What had been put on the bulletin board? So just look at the pins of this particular. कैसे इसके pins बनाने हैं, you have to look at. तो आपको highlight करना है. Unlike the news of lost battles, the draft and the orders of commanding officer, the bulletin board displayed the shocking information of replacing the teaching of French with German. यानी कि जो basic pin क्या बनता है? Replacing French with German. तो आपका ये पिन जो इसका आंसर बनता है, यू हैव टू हाईलाइट. लेकिन उसका क्वेश्चन का बेस बनाने के लिए यू हैव टू हाईलाइट कि अनलाइक द न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल्स, क्योंकि उस ब्रिटेन बोर्ड पे जो भी हार जाते थे वो पूरी न्यूज हाईलाइट की जाती थी. द ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो भी कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर होते थे, नोटिस होते थे, उसी डिस्प्ले बोर्ड पे लगते थे, उसी बुलेटिन बोर्ड पे लगते थे, पब्लिक बुलेटिन बोर्ड पे. और आज क्या था लगा हुआ, क्यों रश था? तो यू हैव टू हाईलाइट. Just highlighting the information of replacing the teaching of French with German in the schools of Boston and Lorraine as per the order from Berlin. तो अगर आपने ये पिन आपने लिखा है, then your answer is capable for just looking at good marks. अगर बिना वाक्य आप लिखते जा रहे हो बिना बेस के, automatically you can never ever be able to get marks. यानी सबसे पहले read question very carefully, then make pin, then look at the tense. तो उसी tense में हमें आंसर को हाईलाइट करना होता है जिस टेंस में क्वेश्चन होता है. So now just look at the next question. अगर एक just if we look at this particular question, what was Anita's greatest fear as he moved towards the school? जैसे ही फ्रेंड्स स्कूल जा रहा था तो क्या डर था, ग्रेटेस्ट फियर क्या था? अब देखिए क्या पूछा गया. तो यू हैव टू लुक एट, यानी ये हमें ये सर्च करना है कि कौन सा डर था उसको तंग कर रहा था जब फ्रेंड्स स्कूल जाने के लिए तैयारी करने की सोच रहा. तो यू हैव टू हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो he was afraid of animals politics. इसका आंसर क्या बनता है? तो he was afraid of animals punishment. तो अब उसका कारण थी क्यों animal क्यों उन्होंने punishment देनी थी? The reason behind that was he had not prepared
the topic for which was to be testified on that particular day. He had not prepared the topic participle. So that is why he was afraid. Yani you have to look at the answers in a very systematic way. I think you are crystal clear. So lesson 1, 2 or 3 that will be testified on Monday. I think you should give very fine response. You will study very sincerely. तो ऐसे ही पिन बना के माइंड मैप बना के वोकैबुलरी उसकी क्लियर होना चाहिए, then only you will be able to get. So now just look at the demonstration of the letter to editor. Letter to editor is also a part of your syllabus so far as this examination, this particular September exams are concerned. तो आपको कैसे लिखना है? Just quick revision of this. So self address, left side. Don't forget left side. So then you have to highlight self address in 2 lines only. In a very systematic way. Leave 1 line, then date. Procedure of writing date 18 September 2020. Already I told you don't use 18, 19, but 9200. That is considered wrong. So you have to look at the next step. You have to highlight the editor. Receiver's address. So yeah, the editor. तो कई बार क्या होता है टॉपिक में राइट अ लेटर टू द नेशनल डेली, तो हम क्या करते हैं नेशनल डेली ही लिखते हैं. कई बार होता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली. नेशनल डेली होता है जो न्यूज़पेपर हमारे नेशनल लेवल पे फेमस है, जैसे दैट रिव्यू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, a number of newspapers are there. Local daily होता है जैसे न्यूज लाइन, number of local newspaper are there, हरी भूमि and what not, and you have to look at this particular point. यहाँ पे लोकल डेली नहीं लिख देना, आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है. अगर नेशनल डेली है किसी भी नेशनल लेवल की न्यूज़पेपर का नाम लिखिए. अगर लोकल डेली है यू हैव टू हाईलाइट अकॉर्डिंगली. तो उसके बाद किस सिटी में उसका मेन ऑफिस है. अगर आप द ट्रिब्यून लिखते हो तो उसका हाईलाइट चंडीगढ़ करोगे क्योंकि उसका मेन ऑफिस जो है वो चंडीगढ़ में. और अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया करोगे तो दिल्ली में है उनका ऑफिस. तो उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट. Subject must be to the point. Maximum 4 to 5 words should be used to highlight the subject of letter. Again, same procedure. First letter of each and every word should be in capital with the exception of preposition, conjunction and articles. तो उसके बाद सब के बाद हमें फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखना है उसका क्या करना है. वी हैव टू लुक एट द थिंग्स इन वेरी सिस्टमैटिक वे. फर्स्ट पैराग्राफ में हमें स्टेटमेंट हाईलाइट करना है. स्टेटमेंट एक बिल्कुल सेम होगा हर लेटर टू एडिटर का. टू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट डैश 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 प्रॉब्लम. यानी ये लाइन जो है वो सब जगह सेम होगा कि थ्रू द column of your esteemed newspaper I want to highlight whatever the problem may be. नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको डिटेल्स देना है. ये 3 पैराग्राफ्स में की बॉडी होगा तो आपको रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम हाईलाइट करना है. जो नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ, और सेकंड पैराग्राफ में कॉजेज भी हाईलाइट करने हैं कि क्या रिजल्ट है, क्या कॉजेज है उस प्रॉब्लम के.
फिर आपको you have to highlight suggestions. Suggestions, you can use separate paragraph for suggestions. Then this particular letter will be ended by highlighting yours faithfully. Never look at yours sincerely. Never look at yours truly. Now take care of this particular point. Apostrophe कभी भी नहीं आता जब हम yours word लिखते हैं. You should be crystal clear up to this particular point. हर point को आपने left side पे लिखना है. Write everything from left. Left to right चलना है, यानी extreme left, यानी you are able to understand. अगर पैराग्राफ भी चेंज करना है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ लिखेगा, वो भी बिगनिंग क्या होगी? इट विल बिगिन फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक फॉर्मेट ऑफ लेटर टू द एडिटर. सो आई थिंक टाइम सेज that we have to close the lecture. So this is all for today. Read out any query. You can raise at any moment. Thank you. Thanks a lot.